This program was started with the vision, direction, and guidance of our dear chairman, Dr. Sanjay Malpani, sir. He is here amongst us to initiate the program. This program is conducted for the students of grade 9 and 11. This is a stage where students are faced with the dilemma of making the correct choice at the next level, grade 10 and grade 12. They choose their streams of academic pursuit after grade 9 and in the colleges after grade 12. It is very important that at this time, students have set a clear target or goal. Vidya Vrat Sanskar is not just a process which guides the children to start thinking about their goals, but also a process which combines nurturing values, career guidance, goal setting, and thinking about their overall motive of their life. Our dear chairman, Dr. Malpani, takes a lot of personal interest in this program. Experts from different fields are invited to talk and guide the students, help them to choose their desired career from a plethora of choices. Here, we would like to take the names of a few personalities who have come and interacted with our dear students. We had Mr. Shadab Siddiqui, a career counselor who interacted with the students of grade 9, 10 and 11 and spoke to all of them about the different choices that they can pick up after they move ahead in their life after grade 10 and 12. We also had Mr. Surojit Saha, an entrepreneur from School for All, who again came to the school and interacted with the students on the options and the advantages of being an entrepreneur and what it can do to help the country grow. We had Mr. Satyajit Mittal from Eroto Shoes, who was an innovator and who also interacted with the students and guided them as to what are the prerequisites that would be needed if you wanted to become an innovator or an entrepreneur. We also had the Silica School coming to DHRUV. This was designed to interact with the students and guide them about the different options that are available in the field of mass media. Here, continuing, students write their SMART goals, which are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. I'm sure all the parents would have gone through the SMART goals that their children have set up for themselves. They are also expected to write things that they will do step by step to achieve their goals. The culmination is in the form of a yajna, where they seek blessings of their elders as they start working towards attaining their goals successfully and lead a meaningful life. We will be starting the process of Vidya Vrat in just a short while, after which Chairman Sir will address the students and the parents, and then some students can share their goals. We are ready to start the process. Parents and students, we request you to be completely involved in the process because this is an auspicious moment and this will be a moment for all of us to cherish in the long time to come. Sir, with your permission, if we may start. Hari Om. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश जी घुमावदार सूंड और महाकाय शरीर वाले
तथा करोड़ों भास्करों की आभा समान जो तेजोमय है, ऐसे हे देव, मेरे कार्यों में आने वाली सभी बाधाओं को सर्वदा दूर कीजिए। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। जिसके चरण कमल रत्नों से परिपूर्ण समुद्र प्रक्षालित करता है, जिसके मस्तक पर पर्वतराज हिमालय मुकुट के समान विराजमान है, जो महान राजाओं और ज्ञानी ऋषियों के पुण्य कर्मों से परिपूर्ण है, ऐसी भारत माता को प्रणाम। अब हम विद्याव्रत का संकल्प करते हैं। गुरु और पालक। इह पृथिव्यां जम्बुद्वीपे भरतवर्षे पुण्यनगरे सूसग्रामे शुभकृत नाम संवत्सरे माघ मासे शुक्ल पक्षे अमावस्यां तिथौ शनिवासरे उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अस्माकं छात्राणां व्यक्तित्व विकासार्थं विद्याव्रत संस्कारं करिष्यामहे। इस पृथ्वी पर आशिया खंड में, भारतवर्ष में, पुणे नगर के सुस गांव में, शुभंकृत नाम के संवत्सर में, माघ मास में, शुक्ल पक्ष में, अमावस्या तिथि पर, शनिवार के दिन, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर हमारे पाल्य के व्यक्ति विकास के लिए विद्याव्रत संस्कार करने वाले हैं। गुरु और उपस्थित जन। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर शुचिः। मनुष्य प्राणी चाहे पवित्र अथवा अपवित्र किसी भी अवस्था में हो, ईश्वर का चिंतन उसे पूर्ण रूप से शुद्ध बना देता है। विद्याव्रत स्वीकारने का प्रयोजन क्या है? गुरु और उपस्थित जन। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्य
सत्यमाप्यते। श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत के पालन से दीक्षा तथा उत्तम अधिकार प्राप्त होते हैं। दीक्षा द्वारा सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इससे मन में व्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। यही श्रद्धा सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है। गुरु और उपस्थित जन। सत्येन लभ्य सत्येन लभ्य तपसा हि एषः तपसा हि एषः आत्मा सम्यक् ज्ञानेन आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः यतयः क्षीणदोषाः। जो सत्य का व्रत लेकर कठिन तपश्चर्या करता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति से तथा इंद्रिय संयम से भी आत्मज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान हमारे अंदर ही बसता है। तपश्चर्या से निष्पाप बने साधु पुरुषों को आत्मज्ञान के तेजस्वी रूप की पहचान होती है। One who takes a vow of truth and practices severe penance, to such a person self-knowledge and enlightenment is obtained. Enlightenment is also obtained by superior knowledge and control over one's senses. Enlightenment resides within us. The resplendent form of enlightenment of Guru and sages who become sinless by penance is identified. गुरु और उपस्थित जन। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते नानृतन् नानृतम् सत्येन पन्था सत्येन पन्था विततो देवयानः विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो हि येनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्तकामा आप्तकामा यत्र तत् यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम् सत्यस्य परमं निधानम्। अंत में सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। देव देवताओं का मार्ग भी सत्य के आचरण से ही विस्तृत बना है। सत्य के आचरण से ही ऋषि मुनि अपने ध्येय की प्राप्ति करते हैं। यही ध्येय सत्य का सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है। The path of the deities has also been detailed and read by the practices of truth. Sages achieve their goals only by following the path of truth here. This aim is the superlative abode of truth. गुरु और उपस्थित जन। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा वानप्रस्थो यतिस्तथा एते गृहस्थप्रभवः एते गृहस्थः प्रभवाः चत्वारः पृथगाश्रमाः चत्वारः पृथगाश्रमाः सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथा शास्त्रं निषेविताः यथा शास्त्रं निषेविताः यथोक्त
यथोक्तकारिणं विप्रम् यथोक्तकारिणं विप्रन् नयन्तिं परमां गतिम् नयन्ति परमां गतिम्। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये पुरुषार्थ के 4 आश्रम है। गृहस्थाश्रम इन चारों का आधार माना जाता है। इन चारों आश्रमों का क्रम से शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु और उपस्थित जन। न हि ज्ञानेन सदृशम् न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम् इह विद्यते पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं कि उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है जो योगाभ्यास की सहायता से मन को एकाग्र करता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही सबसे पवित्र है। Lord Krishna himself states in the 4th chapter of the Bhagavad Gita that only the person who practices yoga to focus one's mind attains enlightenment. In this world, knowledge is the most sacred. गुरु और उपस्थित जन। सत्यं ज्ञानम् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् गृहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सत्य और ज्ञान अमर्यादित है, अतः ब्रह्मचर्य आश्रम के आयुष्य काल में प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना है। हमारे आचरण पर खान पान, व्यायाम, विश्रांति, निद्रा तथा जागृति इन सभी बातों में संयम अति आवश्यक है। यह आचार सूत्र भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं। व्रतार्थी अथातो अथातो ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्या श्रमयम नियम जिज्ञासा श्रमयम नियम जिज्ञासा। अब हमें ब्रह्मचर्याश्रम के यमनियम समझाइए तथा हमें विद्याव्रत की दीक्षा दीजिए। व्रतार्थी अनुग्राह्या वयम् अनुग्राह्य अहम् कृपया आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। गुरु और अभिभावक भवद्भिः भवद्भिः अस्मत् अस्मत् अपत्यानि अपत्यानि अनुग्राह्याणि अनुग्राह्याणि। हे आचार्यवर, हमारे बच्चों पर अनुग्रह कीजिए। ब्रह्मचर्य आश्रम के यम नियम। पहला, युक्ताहार विहार। गुरु और उपस्थित जन। युक्ता
युक्ताहारविहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। जिसका खान पान मर्यादित है, खेलना घूमना आदि नियमित है, जिसकी निद्रा और जागने का समय योग्य है, ऐसा व्यक्ति सहज रूप से दुख से दूर रहता है। हम ज्ञान पाने का प्रयास जब करते हैं तब हमारे इंद्रिय हमें अनचाहे काम करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, A person who maintains limits in eating habits, who has a systematic approach to recreation, playing, who sleeps and wakes up at an appropriate time, such a person will find it easy to stay away from pain and sorrow. We have to work or make an extra effort towards gaining knowledge when our mind and senses keeps us occupied in needless, unimportant tasks. This is why Lord Krishna says, गुरु और उपस्थित जन, काम एष क्रोध एषः काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम् विध्येनम् इह वैरिणम्। यह अकेली वासना है जो जुनून की विधा के संपर्क से पैदा हुई है और बाद में क्रोध में बदल गई। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, इस प्रकार एक ही साथ सारी चीज़ें पाने का लालच और वह न मिलने पर आने वाला क्रोध, यह दोनों बातें व्यक्ति की सारी अच्छाई निगल लेती है। इसलिए लालच और अधिक क्रोध हमारे महापापी शत्रु है, ऐसे जानिए। गुरु और उपस्थित जन, आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लालच और क्रोध विद्यार्थियों के शत्रु है, इसलिए सदैव अतृप्त रहने वाले ये शत्रु ज्ञान संपादन के मार्ग में बाधक है। Lord Krishna advises Arjuna that greed and anger are the enemies of students. That's why these enemies, who are always unsatisfied, are an obstacle in the way of attaining knowledge. दूसरा, इंद्रिय संयमन। हमारी आँखों को सुंदर दृश्य देखना अच्छा लगता है, कानों को सुरीला संगीत सुनना, जिह्वा को स्वादिष्ट पकवान खाना अच्छा लगता है। ऐसे में हमारा मन स्वाध्याय की ओर एकाग्र होना कठिन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय नियमन का महत्व विशद किया है। Our eyes like to see picturesque scenes, ears like to hear melodious music, our tongue likes to eat tasty, flavorful food. In a situation like this, it is difficult for our mind to focus on self-learning. This is the reason why Lord Krishna has stressed
on the importance of gaining control over our senses, organs, and our senses. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तब अपनी इंद्रियों को वश में कर ज्ञान को भुलाने वाले राग, लोभ आदि विकारों पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा, दैनिक उपासना। आवश्यकता अनुसार खानपान, ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हमें प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसे ही संध्या अथवा उपासना कहते हैं। सुबह जल्दी उठकर शरीर शुद्धि पश्चात स्वच्छ तथा पवित्र आसन पर बैठकर उपासना की जाती है। वह कैसे? गुरु और उपस्थित जन। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये योगम् आत्मविशुद्धये। आसन पर निश्चल बैठिए, शरीर स्थिर कीजिए, मन की चंचलता को रोकने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार सीधे बैठकर मन को अंतर्मुख कीजिए। अंतर्मुख होने से आपका क्या अभिप्राय है? अपने स्वयं के हित के लिए स्वयं से संवाद कीजिए, शरीर स्थिर कीजिए। यह बातें हमें मन के विचारों को कम करने में मदद करती है। मन में आने वाले सारे विचार कम करते करते अंत में स्वयं के हित का विचार कीजिए। इसके पश्चात अपने आप से संवाद कीजिए। अपने जीवन में मुझे क्या बनना है? मेरा बीता हुआ कल कैसा था? मुझे और क्या करना चाहिए? मैं आज क्या करने वाला हूं? इन बातों का विचार कीजिए। इस आत्म संवाद युक्त ध्यान के बाद गायत्री मंत्र पढ़ते हुए मन को व्यापक बनाते जाइए। अंततः हमारी बुद्धि प्रखर हो ऐसी प्रार्थना कीजिए। चौथा, स्वाध्याय प्रवचन। ब्रह्मचर्याश्रम के युक्ताहार विहार, इंद्रिय संयमन और ईश्वरोपासना, इन नियमों का आचरण करते हुए और क्या करना चाहिए? पढ़ना और पढ़ाना, इनके द्वारा ज्ञान बढ़ाते जाइए। समय व्यर्थ न गवाते हुए सदैव यह ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसे तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है। While following the Yuktahar Vihar, Brahmacharya ashram sense restrain the God worship. What else should be done? Read, learn and teach. It has been explained in the Tritiya Upanishad that we should endeavor to expand our knowledge by reading and increasing our knowledge, by teaching and wasting no time in fruitless endeavors. One should always keep increasing this knowledge to attain one's goals. गुरु और उपस्थित जन। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च
सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि तपः। हमारी सृष्टि में कभी भी न बदलने वाले नियम काम करते हैं। इन निसर्ग नियमों को ऋत कहा जाता है। जिसे हम सच झूठ कहते हैं उसे ही सत्य असत्य का शब्द प्रयोग किए जाते हैं। विद्या, कला अथवा शक्ति प्राप्त करने के लिए दीर्घ समय तक जो कठोर परिश्रम किए जाते हैं उन्हें तप कहते हैं। इस प्रकार से तप करते हुए मन का संयम जरूरी है तथा ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय के ऊपर नियंत्रण जरूरी है। इसे ही शम दम कहा जाता है। मनुष्य मात्र को खुश करना अच्छा काम है, इसलिए मानुष शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ऋत, सत्य, तप, शम, दम और मानवता सारे ही श्रेष्ठ है। इसके साथ ही पढ़ना और पढ़ाना इससे अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं। यही सच्चा और श्रेष्ठ तप है। Our creation stands firm with never changing laws. These natural laws are called Ruth, which we know as a truth or a lie. It is only for these that the words true and false are used. The dedicated, prolonged endeavor that we put into attain excellence in knowledge, arts, or power is known as tapasya or meditation. It is important to stabilize the mind and maintain control over our sense organs as well as our actions while performing such tapasya and meditation. It is considered to be a good action to bring happiness to mankind, O Manushya. That is why the word Manushya is used. In this manner, Ruth, truth, meditation, O tapasya, sham, dam, and humanity all are of highest value. Along with these, learning and teaching are considered the best, and nothing has been given higher importance than learning and teaching. This indeed is the real and the highest form of tapasya. पांचवा, सद्गुरु सेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे गुरुजन ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह हमें पूजनीय है, अपितु गुरु प्रत्यक्ष परब्रह्म स्वरूप है। उन गुरुवर को वंदन है। छठा, व्यक्तिमत्व विकसन, राष्ट्र अर्चना। न त्वहं कामये राज्यं न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। मुझे राज्य और स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, नहीं मुझे जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति चाहिए, किंतु जिनका जीवन दुखमय है उनकी वेदना दूर हो, इतनी ही मेरी आकांक्षा है। यज्ञ अग्नि को साक्षी मानकर। Now we will be doing the learning process starts, and that is the reason the value of this yajna is very important. In ancient days, every day this ritual used to happen. But in modern time, at least when we are beginning with deciding our career, we are going to bow down in front of all our teachers, all the gurus, and the Almighty, the God. And we believe that we are here to surrender. We are here to surrender ourselves. And for that, we are putting this havir, these things in the fire, so that we are surrendering. So this is a ritual to feel that yes, we are surrendering ourselves. Om Agnaye Swaha. I am surrendering this to the fire. I am dedicating my life to gain the knowledge. Agnaye Idam. This belongs to him and not me. This process brings down the ego. And so while performing this ritual, the feeling should be like that I am surrendering myself for the knowledge, for the sake of knowledge. I am going to work hard for this. For next 4 years, I am going to gain knowledge. For that, I am going to work very, very hard. And then after that, once I get admission to the desired college, I will further work hard till the age of 25 before I enter in the grihasthashrama. Before I get married, I have to keep on working hard. I have to keep away myself from all these attractions, affections, addictions, and so on. For this, the ritual of this havan is very important. When we say Om Suryaya Swaha, Suryaya Idan Namama, that means I am going to pray to that energy, the Surya, the sun, and I am going to dedicate this to that Teja. So, this is all for that Teja. I am going to be Tejasvi. Yatte Agne Tejaste Naham Tejasvi Bhuyasan. This prayer we generally do on the birthdays. But today we are going to say that Om Prajapataye Swaha. I am going to dedicate this to Prajapati. This all belongs to him and not me. Because the lifespan is very small. This lifespan of 80, 90, 100 years is a very small time. Whatever I am going to achieve this, all this is because of the nature which is supporting me. All this is because of that Almighty which exists in me, and this belongs to him and not me. So my life is not just for myself. This life is for everyone, and for that we are going to do this ritual of yajna. So you will be taking up that ghee and the rice, the chawal,
and then you are going to put it in the fire. And very slowly, in a very pious way, Om Agnaye Swaha. Om Agnaye Swaha. Agnaya Idan Namama. Agnaye Idan Namama. Om Suryaya Swaha. Om Suryaya Swaha. Suryaya Idan Namama. Suryaya Idan Namama. Om Prajapataye Swaha. Om Prajapataye Swaha. Prajapataye Idan Namama. Prajapataye Idan Namama. यह मैं अग्नि में समर्पित करता हूँ। यह अग्नि के लिए है, मेरा नहीं। यह सूर्य को समर्पित करता हूँ। यह सूर्य के लिए है, मेरा नहीं। यह प्रजापति को समर्पित करता हूँ। यह प्रजापति के लिए है, मेरा नहीं। यज्ञोपवीत धारण, गुरु और अभिभावक। अहो आचार्य, इमे व्रतार्थिनः यज्ञोपवीतेन अनुग्राह्याः भवता। हे आचार्यवर, विद्याव्रत को स्वीकार करने वाले इन छात्रों को अनुग्रहित कर व्रत चिन्ह दीजिए। O Acharyavar, please oblige these students who pledge and accept the Vidya Vrat and present them with the token of this pledge, this Vrat. गुरु और व्रतार्थी। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं। प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्। प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्नन् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रम्। प्रतिमुञ्च शुभ्रम्। यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बलमस्तु तेजः। यह व्रत चिन्ह अत्यंत पवित्र और भगवान प्रजापति से निर्माण हुआ है। यह व्रत चिन्ह हमें उज्ज्वल तथा निर्दोष आयुष्य, बल और तेज देने वाला हो। गायत्री मंत्र संथा। ॐ भूः हे पृथ्वी। ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ भुवः। हे अंतरिक्ष। ॐ स्वः। ॐ स्वः। हे सूर्य। ॐ महः। ॐ महः। हे कोटि सूर्य। ॐ जनः। ॐ जनः। हे आकाश गंगा। ॐ तपः। ॐ तपः। अनंत आकाश गंगा। ॐ सत्यम्। ॐ सत्यम्। हे परब्रह्म। The token or symbol is very pure and sacred and is created by blessings of Lord Prajapati. May this symbol of our Vrat, that is pledge, grant us a blame and sin-free long life that is full of strength and brilliance.
Gayatri Mantra, Earth, Space and Universe, Sun, millions of suns, Milky Way, the infinite Milky Way, ultimate truth, the eternal sky, Param Brahma. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इस परब्रह्म के, भगवान के सर्वश्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। वह हमारी बुद्धि को चेतना दे। सारे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। प्रथार्थी क्रम से आगे आकर यज्ञ वेदी पर अक्षता और फूल अर्पण करते हैं। See, what you have to do now is, you will put some flowers next to the fire, not in the fire. You have to put it on Yajna Vedi, the outside of it. You have to bow down, and then, one by one, you will come up with a fruit in your hand, and you will accept the Vrata Chinha. Now, you need to understand, I seek your attention here because this is the most important thing in today's ritual, that today we will be giving you one Vrata Chinha, a symbol. This symbol is like a thread. You can take any symbol from your parent if you wish, but today we will be giving you one symbol, that is the thread which I have brought specially for you from Varanasi. And you will take it from us, and then you will go back to your parents. You will give it to your parents. Your parents will put it in the water, and then they will take it out, and then they are going to thread you on your wrist, on your right wrist. Why this? What is the need? Why we are doing like this? Basically, when we are putting this thread on your hand, that means we are tying you with your vratas which you have decided, the targets which you have taken, and the 3 things which you are going to do every day. This will keep on remembering you. Whenever you look at your hand, this will remind you that you have to do these things. This is your target. You are working for this. So for next 5 years, this is going to remain like this. And this will keep on reminding you all the time, every day, that yes, I have to work for this for so many hours, for my intellectual growth. I have to study for so many hours, for my physical growth. I have to do this kind of exercises. It has to be smart, that is specific, measurable, achievable, relevant, and time-bounded. You must have decided that what exactly you are going to do for your physical growth, because this is the time when you have to put in all your efforts to grow in all the directions. The balanced growth, the intellectual growth, the physical growth, and at the same time the spiritual growth. So what you are going to do for your spiritual growth, so that your mind is all the time stable. I have seen people, I have seen students, those who get less marks in the exams, or those who cannot solve the paper, they go home and they suicide. This kind of weak mind is not expected.
We have to be courageous. And what is the exercise to strengthen your mind? And that is the prayer. That is the meditation. You have to keep on strengthening your mind all the time for all small no's which you are going to come across in coming days. Till this time, your parents were supportive to you. Till this time, your parents were giving you whatever you wish. But sometime hereafter, your parent might tell you that no, I cannot give you this. Sometime, even your destiny tells you that no, you cannot get this. That time to accept these no's, we have to be courageous. We have to be very strong from within. And for that, we need to have that strong mind. And that strong mind comes along with spiritual practices. So your physical growth, your intellectual growth, and your spiritual growth, all these three things, your mind, your body, and your intellect, all these three things should grow now. They should be strengthened now. And for this, we are going to give you this black thread which will keep on reminding you all the time. So one by one, you will be coming up, you will be surrendering yourself, and the ritual is giving the fruit. That is surrendering yourself. And then you will get this thread, you can go back to your parents, and your parents will tie it on your wrist. So we can start from here, and few can start from there. So Principal Ma'am and me both will be doing this for you. So everybody got that thread now. Parents will have to put it in the water first, and then put your one finger in between so that it should be loose. It is going to be there for next 4-5 years. So be careful while tying this on their wrist. Keep one finger in between and then tie it. And after going home, you can do one more thing. You can just put a small flame there with some candle or something, and then press it so that it will be permanently there and they won't lose it. I generally change my thread every year because every year I take some target, and every day morning I look at it and I do something for the target every year. And you won't believe that this gives you so much of encouragement, so much of strength to work further for the targets which you have taken. So I hope all the parents must have put it on the wrists of all the children. Right? Good. We have
come to the end of the program. I hope all the parents have tied the thread on the wrists of their wards. I would now request Sir to please come up to the podium and address the parents, students, staff, and encourage us with your kind words, sir. Please switch off all the fans. Please switch off all the fans so that everybody will be able to listen to me properly. Don't worry about the smoke which is there around. It helps your lungs, so nothing to worry about it. You can switch off all the fans. And those who are standing on the back, please sit down. I want everybody to be seated in the hall so that you can listen to the important sum up of the process. जब तक सब लोग स्थानापन्न नहीं हो जाते मैं बात शुरू नहीं करूंगा। सब लोग बैठ जाएं। जिनको नीचे बैठने में तकलीफ है वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अच्छा, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। सुबह 4 बजे उठकर समय पे निकल पाया और बिल्कुल समय पे पहुंच पाया, क्योंकि समय पे मैं नहीं पहुंचता तो फिर बच्चों से क्या कहता। तो समय पे पहुंचना ये पहला संस्कार है। The first thing in life is to be on time, and I could do that from 150 kilometers I traveled and I reached well in time. I interacted with some of the students. I have seen the smart goals which they have taken, and I would like some of them to speak in front of all of you, and they should tell their targets. Even after going home, you should show it to everybody in the family. ये कागज आप घर पर लेकर जाएंगे, परिवार के सबको बताएंगे, आजू बाजू के बच्चों को, दोस्तों को, सोसाइटी के सब दोस्तों को भी बताएंगे कि हमने ऐसा तय कर लिया है। अपने दादा दादी को फोन करके, नाना नानी को फोन करके बताएंगे, आज ही बताएंगे कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम किया हमारे जीवन का, कि हमने एक टारगेट फिक्स किया हमारे लिए और हम लोग इस टारगेट के ऊपर अब काम करना शुरू कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दें। टेक देयर ब्लेसिंग्स। You have to call your nana nani, your dada dadi, those who stays away from you but they love you a lot. You must call them and tell them that today is a very important day of my life and I have started doing this from today. Why this? Why we have to decide on this? Why we have to tell this to everybody? We must need to understand this. एक बहुत प्यारी कहानी, मुझे बहुत पसंद वो कहानी, और जो कि एक सत्य घटना। जापान का राजा था जिसका नाम था नेकी नाबू, ऐसा उसका नाम था। पुरानी कहानी है। और ये जो नेकी नाबू राजा था, उस देश की जनता बहुत प्रेम करती थी उससे। एक दिन यूं हुआ कि बाजू के देश के राजा ने जापान पर आक्रमण कर दिया। जापान पर बहुत बार आक्रमण हुए और हर बार जापान खड़ा हुआ, और सबसे भयंकर आक्रमण जो जापान पर हुआ था वो हिरोशिमा और नागासाकी, जब अणुबॉम्ब डाले गए इन दोनों शहरों पर, पूरा विध्वंस कर दिया। उसके बावजूद जापान फिर से खड़ा रहा और मात्र 30 वर्षों में जापान ने ऐसी प्रगति आरंभ कर दी जिससे जापान के प्रोडक्ट्स सारे विश्व में क्वालिटी प्रोडक्ट करके बिके जाने लगे। इसके पीछे की कौन सी वो शक्ति है, इस कहानी से आपको पता चलेगा।
कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति ने जापान को बार बार जगा दिया, बार बार खड़ा कर दिया। तो इस नेकिनाबू राजा पर आक्रमण हुआ और पहले ही दिन हुआ यूं कि उस जापान की सेना का सेनापति उस युद्ध में मारा गया। जापान की सेना तितर बितर हो गई, बिखर गई, लौट कर आई, हार के आई। और जापान के राजा को संदेश दिया गया कि आक्रमण इतना भयंकर है और वो लोग हमारी राजधानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अब करेंगे तो क्या करेंगे। सेनापति मारा गया, सेना बिखर गई, बहुत कम सेना बची हुई लौट के आई। तो राजा चिंताक्रांत हुआ कि अब करे तो क्या करे। उसके राजमहल के बगीचे में ये राजा घूम रहा था, इधर उधर कर रहा था, विमनस्क था, हतप्रत था, जैसे अर्जुन गलित गात्र हो गया, धनुष्य छूट गया हाथ से, उसका मन भ्रमित हो गया, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। और तभी एक सन्यासी वहां आके पहुंचा। उस सन्यासी ने इस नेकिनाबू राजा से पूछा कि तुम्हारी चेहरे पर मुझे चिंता के भाव दिख रहे हैं, वाई यू आर वरीड, टेल मी। राजा ने कहा छोड़ो मुझे अकेला, तुम्हें बताकर कोई मतलब नहीं। सन्यासी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं समझ कर रहूंगा, मैं जान कर रहूंगा, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरे राजा के चेहरे पर यदि चिंता है तो वो मेरी भी चिंता है। तो आप कृपा करें मुझे बताएं कि आपकी चिंता क्या है। राजा ने कहा तुम समझ के क्या करोगे, हमारे देश पर आक्रमण हो चुका है और शत्रु की सेना आगे बढ़ रही, हमारा सेनापति मारा गया, हो सकता है कल राजधानी पर आक्रमण हो जाएगा और हम या तो मर जाएंगे या बंदी बना लिए जाएंगे। आज मैं राजा हूं, कल मैं रंक रहूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सेनापति ने कहा ऐसी बात क्यों कर रहे हो, हम फिर लड़ेंगे, एक सेनापति मारा गया तो क्या हुआ, हम दोबारा लड़ेंगे। उसने कहा वैसा पराक्रमी योद्धा हमारे पास है नहीं जो इस सेना का नेतृत्व कर सके। उसने कहा आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं, मैं उस सेना का नेतृत्व करूंगा। राजा हंसने लगा, कहा आप पागल हो गए हो, आप सन्यासी हैं, आपको क्या जानकारी कि तलवार कैसी चलाई जाती है, आपको क्या जानकारी कि घोड़े पे कैसे सवार हुआ। बोला उसकी चिंता आप ना करें, मरने मैं जा रहा हूं, आपके मरने से पहले मैं मरूंगा, आपको क्यों चिंता करने की जरूरत है। चिंता तो मुझे होनी चाहिए कि ये मैं कैसे करूंगा, और आप चिंता ना करें, मैं जीत के आऊंगा, ये भरोसा आपको दे के जा रहा हूं। अरे बोले तुम्हारी ये दाढ़ी, तुम्हारी ये जटाएं, तुम्हारे ये गेरुए वस्त्र कैसे संभव है, तुम नहीं कर सकते। उसने कहा दाढ़ी मूछे तो निकाल दी जा सकती है, बुलाइए नाई को, दाढ़ी उतार दीजिए। नाई को बुलाया गया, इस सन्यासी की दाढ़ी जटाएं उतारी गई, उसको सेनापति के वस्त्र पहनाए गए, तलवार लगाई गई। तपस्वी था तो स्वाभाविक रूप से सेनापति का रुबाब दिखने लग गया जैसे ही वो वस्त्र उसने पहने। और उसने कहा राजा आप चिंता ना करें, बस मुझे सेना से परिचय करवा दीजिए, सेना को कह दीजिए कि मैं हूं अब नया सेनापति। बची हुई छोटी सी सेना थी, बाकी लोग भाग गए थे या मर गए थे। उस सेना के सामने राजा इस नए सेनापति को लेकर आया और राजा ने कहा कि ये तुम्हारा सेनापति अब ये युद्ध करेगा, जाइए इसके साथ। सेना देखती रह गई कि इसको तो कभी देखा नहीं हमने, ये कैसे सेनापति। लेकिन उसकी आंखें तेजस्वी थी, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो सेना ने सोचा चलो देख लेते, और सेना उस सेनापति के पीछे पीछे चलने लगी युद्ध भूमि की तरफ, जहां से शत्रु सेना का आक्रमण होना था उस तरफ। जापान की ये छोटी सी सेना अपने नए सेनापति के साथ बढ़ गई। रास्ते में एक पैगोडा था, एक मंदिर था। उस मंदिर के सामने इस सेनापति ने सबको रुकाया, कह दिया कि रुक जाओ, मैं यहां पे 3 बार टॉस करूंगा, 3 बार छापा काटा करूंगा।
3 में से यदि 2 बार छापा आता है, इस भगवान को प्रार्थना करेंगे और 3 बार टॉस करेंगे। 3 में से 2 बार यदि छापा आता है, इफ हेड कम्स ट्वाइस, then be assured that we are going to win. Then we will go for the war. But if tail comes twice, then we will go home. Then we don't need to go ahead. सबको जीतना था, तो सबने बड़े मन से प्रार्थना की कि भगवान हमें जिताएं। तो इस सेनापति ने सिक्का निकाला, भगवान के सामने सिक्का रख के प्रार्थना की कि भगवान हमें शक्ति दो, हमारे तरफ से आदेश दो। सारी सेना देख रही थी कि क्या निकलता है। इस सेनापति ने टॉस किया, अपने हाथ पर वो सिक्का पकड़कर उसको ढक दिया। सबकी उत्सुकता तनी जा रही थी कि क्या निकलेगा। सबके मन से संकल्प था कि हेड आना चाहिए, छापा आना चाहिए। जैसे ही उस सेनापति ने वो सिक्का सबको दिखाया, सब आनंदित हो गए, चिल्लाने लगे, क्योंकि छापा आया था। सेनापति ने कहा, रुक जाओ, अभी 2 बार बाकी है, मैं दूसरी बार सिक्का उछालता हूं, देखते क्या होता है। और दूसरी बार सिक्का उछाला गया, उसने अपने हाथ पे पकड़ा, हाथ ढक दिया। लोगों की प्रार्थनाएं और तीव्र हो रही थी कि भगवान बस हमारे तरफ से आदेश दीजिएगा। और जैसे ही सेनापति ने अपना हाथ निकाला और लोगों ने सिक्का देखा, फिर एक बार छापा आ चुका था और लोग नाचने लगे, जय घोष करने लगे कि 2 बार आ गया, 2 बार आ गया। सेनापति ने कहा, रुक जाओ, बात 3 बार की है, हम जीतने तो वाले हैं, ये पक्का हो गया, लेकिन तीसरी बार भी यदि छापा निकलता है ना, तो हमारी जीत अभूतपूर्व होगी। प्रार्थना करो। और सबने मिलकर फिर प्रार्थना की। तीसरी बार सिक्का उछाला गया, सेनापति ने अपने हाथ बंद किए। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हमारी तरफ से तीसरा आदेश भी दे देना। जैसे ही सेनापति ने हाथ निकाला और लोगों ने देखा कि तीसरी बार भी फिर छापा आया है, फिर एक बार हेड्स आया है, लोग वाद्य बजाने लगे, सिंह बजने लगे, तुतारियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, लोग चिल्लाने लगे, गीत गाने लगे, नाचते हुए, अपना ध्वज उछालते हुए रणभूमि की तरफ जाने लगे। और शत्रु की सेना जब सामने से आ रही थी, उन्होंने देखा कि ये नया उत्साह, इतने चिल्लाते हुए आ रहे हैं लोग, ये कैसा जोश। जब उनके शंख ध्वनि सुने उन्होंने, तब शत्रु सेना के हृदय विदीर्ण होने लगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। घमासान युद्ध हुआ और घमासान उस युद्ध में जापान की सेना आत्मविश्वास के साथ लड़ी और विजयी हुई और शत्रु की सेना दौड़ने लगी पीछे। उन सभी लोगों को सीमा के बाहर तक खदेड़ दिया गया और विजयी सेना फिर अपनी राजधानी की तरफ बढ़ चली। घोड़े पर सवार ये सेनापति और पीछे चल रही सेना जय घोष कर रहे थे अपने देश का, अपने राजा का। राजा को खबर पड़ी कि हम जीत गए, तो राजा हाथी पर बैठकर सेना को मिलने निकला, सेनापति से मिलने निकला। और दोनों की मुलाकात उसी पैगोडा के सामने हुई जहां पे यह सिक्का उछाला गया था। हाथी नीचे बैठा, राजा नीचे उतरा, घोड़े से सेनापति नीचे उतरा, दोनों एक दूसरे को मिले, आलिंगन दिया और राजा ने पूछा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, यह कैसे संभव हुआ। बाजू में खड़ा एक सैनिक तुरंत आगे आया और बोला, महाराज ये जो भगवान है ना मंदिर में, ये भगवान ने आदेश दे दिया था कि हम जीतेंगे। 3 बार सिक्का निकला, 3 बार सिक्के पर छापा निकला। तो सेनापति ने हंसते हुए उस सैनिक की तरफ देखा और वो सिक्का फिर से बाहर निकाला। और सेनापति ने बोला, भैया भगवान ने कुछ नहीं कहा था, सिक्के के दोनों तरफ छापा ही था। मैं 3 बार नहीं 10 बार भी उछालता तो छापा ही निकलना था।
लेकिन उस 3 बार छापे निकलने से तुम्हारे मन में संकल्प जगा जीतने का, और ये जीतने का जो संकल्प तुम्हारे मन में जगा, उसके कारण तुम्हारी जीत हुई। संकल्प ऐसा काम करता है। आज आप सब लोगों ने संकल्प किया है कि मैं ये काम करूंगा, उसको करना है, पक्का करना है। ये ऐसे नहीं किया हमने सब। आप लोगों से इतने लोग आकर बातचीत करके गए, उनके उनके प्रोफेशन के बारे में बात कर गए, आपको क्या करना है आपने सवाल पूछे उनको बहुत सारे, और फिर आपने आपके पेरेंट्स के साथ बात की, और भी कई लोगों से बात की, टीचर्स से बात की, और आपने तय किया कि मुझे इस कॉलेज में जाना है जिसके लिए 10th में मुझे इतने मार्क चाहिए, 12th में मुझे इतने मार्क चाहिए, तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उस कॉलेज में जाकर मैं ये बनूंगा। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, संगमनेर के इस विद्यालय में कई वर्षों से ये प्रथा चलती आई। इस साल ही एक बच्चा मेरे पास आया था, वो अपना ये टारगेट शीट लेकर आया कि सर, मैंने 4 साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने लिख रखा था कि मैं एम्स में जाऊंगा, एम्स के मेडिकल कॉलेज में मुझे प्रवेश मिलेगा। मुझे मिल गया प्रवेश, पेड़े लेकर आया था, उसने लिख रखा था। मैंने अपने फेसबुक पर उसका वो पेज 4 साल पुराना और उसके साथ फोटो मैंने शेयर किया। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। एक बच्चा पिछली साल आया था, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं डिजाइन में करियर करूंगा, क्योंकि उसकी डिजाइन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा चित्र निकालता था। उसकी मां अक्सर मेरे पास आती थी और कहती थी, इसको कुछ नहीं आता जी, कैसे करेगा ये 10th में, पास होगा कि नहीं होगा मैथमेटिक्स में। तो मैं उसकी मां को हरदम कहता था कि अरे उसकी मैथमेटिक्स को क्या लेकर बैठे आप, इसकी चित्रकारी देखो कितनी अच्छी है, और ये डिजाइनर बनेगा पक्की बात है। इस बच्चे को 10th में बहुत अच्छे मार्क आए, 11th और 12th में वो अपने ही स्कूल में रहा। उसने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, क्योंकि उसको डिजाइन में जाना था, वहां आर्ट स्ट्रीम है नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम ली। उसने डिजाइनिंग में अपने चार्ट पर लिख के रखा था कि मुझे NID में प्रवेश मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, यहां पे प्रवेश मिलेगा। दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। इट्स लाइक IIT फॉर इंजीनियर्स, NID is for designers. So he wrote there that I am going to get admission in NID. But then after 12th, he could not get it. He got admission in NIFT, that is National Institute of Fashion Technology. And he got Patna campus in Bihar. And his mother came crying again. Bihar? How can I send my child to Bihar? I said, it's a wonderful campus. You don't need to worry. Send him. And he is confident enough that he will survive there. Don't worry. Ultimately, these children have to face the world. They have to go. They have to go away from home a day. And the day has come. You have to send him. दिल पे पत्थर रख के उसकी मां ने उसको पटना भेजा। पटना में 2nd ईयर में पढ़ते पढ़ते इस बच्चे का फोन आया, सर मेरा एक डिजाइन नेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गया और मुझे स्टेट ने 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया। He got 1 lakh rupees. I asked him to send that design to me just for curiosity, nothing else. I was not going to help him in that designing because I don't know anything about designing. But he sent me everything. I was so happy. And after that, he went for national championship, the competition, and he got selected for international competition. He got award from Government of India for 5 lakh rupees. He again called me, sir, I got selected for international. And now there are so many good designers, those who are going to help me, guide me for this competition. And Government of India has given him best of the best designers in the country to guide him, so that his project should go to international competition. So he completed his course with so many prizes and minimal fees, because that is a government institute. So fees is not much. And he got some money, 6 lakh rupees. So he was very happy.
And last year he came back to me. He told me that, sir, I got admission for post-graduation in IIT. I said, wow, which IIT? He said, I got IIT Guwahati for post-graduation in designing. I said, great, I'm so happy for it. I had forgotten about his target and NID and everything, because every year I keep on doing this ritual with so many students, so keeping it in mind becomes very difficult. But he told me, he reminded me that, sir, I have written NID, but I got IIT. But I'm very sure that I have applied for post-graduation in NID as well, and I'm very sure that I'm going to get it. But I will have to wait for a week for that result to come. I said, are you so confident that you are going to get admission in NID? He said, yes, I'm very confident. I told him that, fine, then come to me once you get the admission. After 1 week, he again came back to me with the result, and he told me that my name is on the top of the list. I am the topper in getting admission from open category. From open category to become topper in NID, admission is very tough. Then I told him that, oh, good, so you achieved your target. You got it. He said, sir, fine, but I don't want to go there now. I wish to go to Guwahati only. Because faculty at Guwahati are better than faculty at NID. That's what I heard from some of my seniors. I said, it is your choice. He asked me, can I change the target? I said, it is up to you. See, these targets are to guide you. They are not the permanent targets. You can change them as and when required, but very consciously. You can change them. Very consciously you will have to change them. For that you will have to think a lot. As you thought a lot about it before you wrote it down, you will have to think again when you will change it. But the most important thing is you cannot change the daily practice. If you have written down that I am going to work for 2 hours on studies, you will have to work on it. If you have written down that I am going to work for 4 hours a day, you will have to work on it. If you have written that I am going to do 12, 13 Surya Namaskars every day, you will have to work on it. If you have written down that I am going to sit for 10 minutes, no problem. Sit for 10 minutes. Understand the process, that how to balance it in 10 minutes time. For first 2 minutes, you have to just concentrate on your breathing. Just look at your breathing pattern for 2 minutes. When you start doing it, even those 2 minutes are very long, Try it out. See how the air goes in, how it comes out, what kind of feel you get, whether it is hot, whether it's cold, where it touches. Just check it. As a third person, you have to just look at your breathing pattern. That is called Shwasa Preksha. Shwasa Preksha. You are a Preksha. Preksha means Prekshak, and you are looking at it. You are the spectator. You are looking at it, not giving any force or anything, no reactions. Just watch it, how it is happening. Automatically, inhalation and exhalation goes slow. And the moment it goes slow, then you have to check Samvedana Preksha. That what is happening in my body. After sitting for 2 minutes, whether my leg is getting numb, whether I have some backache, just watch it, no reactions. Even it is numb, you are not going to move it. You have to just watch it for next 2 minutes. And you will realize that the numbness automatically goes away. Because body is again a third thing. It's not me. Who am I? I am the soul inside. The body is attached to it. When I will die, this body will be detached again. So it is not permanent. But soul is permanent. So even any kind of feeling, that numbness or heaviness or back pain, it goes away when you just look at it for 2 minutes.
And then for next 2 minutes, you have to look at your thoughts. Vichar preksha. That thought comes in, thought goes out. Thought comes in, thought goes out. And a peculiar thing about mind is only one thing can remain in mind at a time. There cannot be 10 thoughts at a time. There cannot be even 2 thoughts at a time. This is a beautiful research done by our yogis and explained it, that mind is such a thing that there at a time only one thought can be there. And with your breathing, that shwasa preksha, samvedana preksha, then you realize that a thought goes out, then the next thought comes in. And there is a space, there is a gap between these two things, that outgoing thought and incoming thought. There is a space in between. You have to search for that space. This is called dharana. The whole process of 6 minutes, it's called dharana. And the moment you get that space, you have to pray that now it's empty. There is no thought inside. The moment all thought goes away, automatically all evils also go away, because evils are followers of thoughts. विचार ही विकारों को जन्म देते हैं. विचार और विकार एक के पीछे एक आते हैं. विचार चले गए कि विकार भी चले जाते, और विकार चले गए कि खाली जगह बनती. वहां पर भगवान प्रतिष्ठित हो सकते हैं. वो जो 4 मिनट है बचे हुए 10 मिनट में से, वो 4 मिनट आपको प्रयास करना है कि मेरा मन खाली रहे और भगवान वहां पे प्रतिष्ठित हो जाए. देखिए क्या पावर आती है आपके अंदर. जीवन के हर नकार को, हर निगेटिविटी को आप आसानी से झेल पाएं, ऐसी पावर ये मेडिटेशन आपको देता है. प्रेयर्स भी जब करेंगे ना, तो ऐसे ही केवल करने के लिए मत करना, मुंह से बोले जा रहे, दिमाग में 1000 विचार चल रहे ना. आप जब भी प्रार्थना करेंगे तब पूरे एकरूपता के साथ करना सीखें. ये जो एकरूपता है, ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती जाएगी. जो बच्चे अभी 9th में, 10th में, 11th में आए हैं, उनको और एक विधा सिखाई जाती है. वो है प्रज्ञा संवर्धन के प्राणायाम. चालू हो गए? सबको सिखाया गया है यहां पर. हाँ, कुछ प्राणायाम जो आपको प्रतिदिन करने हैं. सिखाए गए कि हाथ ऊपर करो, मुझे समझ में तो आए. सिखाए गए कि नहीं सिखाए गए? कितने लोगों को सिखाए गए? जरा हाथ ऊपर कर दो. हाँ, इतने लोगों को सिखाया गया, बाकी लोगों को भी सिखा देंगे नहीं सीखे हो तो. ये जो प्राणायाम है, ये ऐसा चमत्कार, हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं. पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि जब ये करना शुरू कर देते लोग, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उनकी बुद्धि स्थिर होती है. दे कैन कॉन्सेंट्रेट इन अ बेटर वे, दे कैन फोकस इन अ बेटर वे, दे कैन मेमोराइज इन अ बेटर वे. यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स विथ दोज प्राणायाम्स. सो वी ट्राई टू टीच देम, but it's up to you that you have to do it very carefully. You have to do it wholeheartedly. हृदय से, मन से, संकल्प से करना है. आप देखेंगे कि चमत्कार घटते चले जाते हैं. शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है. शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है. Only education is not going to work. Along with education, all these sanskars, this value education, this yoga shastra is very important. I have seen people, those who become doctors, engineers, IITians, but they cannot manage their life. They go into depression so easily. I have been called in Kota by a leading class over there because they had 8 suicides that year. 8 suicides in 1 year. I was called to do the counseling part with parents and children.
I told the same thing. It is so easy, but we don't follow it. We don't even give these 10 minutes to ourselves. Today's ritual is to remind you all the time that you have to follow this, you have to follow this, you have to keep on doing this. And once you start this, you see the change in yourself. You become more confident. And dear parents, you also very smoothly, smilingly can remind your children. Someday it may happen that he has not followed the thing which he has decided. Someday it might happen. But then don't shout. You have to tell it in a very easy way that aaj reh gaya, kal karna hai pakka. Remind them, but don't shout on them, because this is going to happen sometime. They will try their best, and you have to keep on encouraging them and not discouraging them. So this is very important. Parents, आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को encourage करते रहे. आपको एक आध दिन बच्चे ने एक आध चीज नहीं की तो डिस्करेज नहीं करना है. आप उसको शक्ति देते रहे, आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे. ध्रुव ग्लोबल स्कूल का जो मोटो लिखा गया है ना, वो ये वी नर्चर कॉन्फिडेंस. उससे बढ़िया कोई चीज नहीं इस दुनिया में. अपने बच्चों के अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाए ताकि वो इस जीवन की परीक्षा को सफलता के साथ उत्तीर्ण कर सके. This 10th and 12th are very easy, I tell you. Everybody is going to pass. Not a single child has failed till now in DHRUV Global School. Everybody is going to pass with good marks. Last year, everybody was having distinction. Everybody, 100% distinction. What else we want? These marks are not going to decide the examination of life. These marks are only important for getting admission in some good college, that's all. Otherwise, we don't remember our 10th and 12th grade marks. And we never asked our wives before marrying that, what was your 10th score? Have anybody asked that what was your 12th score? No, we don't ask this. Because this is a very small thing in life, but that is very important for getting the admission. They will work on it. They will get admissions in the desired colleges, no problem. But more than that, the confidence level must go high, and today's ritual is going to give them this confidence. And this thread is going to remind them all the time that yes, this is what you have decided. And then you will do it. And for that, the dream which you have seen, dreams are not those which we see at night when we are sleeping. Dreams are those which makes us sleepless, which don't allow us to sleep. So today you have seen a dream and you have written it down that I am going to do this in my life. If you are not doing it, you should not be able to sleep. Unless you do those three things every day, you should not sleep. This should happen now. And this thread will keep on reminding you that yes, you have to do it. And dear children, I am so happy today that you have decided to do it. This is the first step towards success. You have climbed that first step. I congratulate you all and I wish you all the best for coming life. Thank you very much. Thank you so much, sir. The words are so inspiring. We feel you should keep talking and we should just keep listening to you. We don't want the storytelling and your words of inspiration to come to an end. But unfortunately, we will have to conclude here. Before we conclude, I would like to invite a few students to come up on stage who would like to read their SMART goals. So, any child who would want to come and share your SMART goals with us? Come on, somebody can come up. It's good to share your goals with everyone and let everyone know if they want to come and meet you 5 years down the line, where they should find you. Those who are courageous will come. Come on. Come.
Anybody else who would like to come up? Yeah. Also can talk about today's ritual. Oh my God, so many are coming up now. Wait, after they finish, then we'll ask our parents to come up. Namaste everyone. I am Vidya Vrat Sanskar from 11th and I have chose science stream and following are my SMART goals. For my personal goals, my short-term goal is that I'll pass 12th standard. I'll pass my 12th standard with 85% in CBSE board exams, and my long-term goal is that I want to become a clinical psychologist and then own an apartment after I become one. For my family, my short-term goal is that I will help in grocery shopping once a month, and long-term is that I will sponsor my parents' medicines for once a year. For my nation, my short-term goal is that I will segregate biodegradable and non-biodegradable waste every day at my home. And long-term is that once I become a clinical psychologist, I will hold a mental awareness camp once a year for young adults. And I have decided the following things to do daily. For my intellectual growth, I'll read 5 philosophical books a year. And for physical growth, I'll do cardio exercise for 30 minutes. And for spiritual growth, I will meditate for 10 minutes and get 8 hours of sleep every day. Thank you. Namaste everyone present here. I am Koshin Raina from grade 11 humanities stream. So some of my goals are my short-term goal for me is that I will score between 92% to 98% in my 12th boards exam. And my long-term goal is that I will get into a film school and become a screenplay writer. My short-term goal for my family is that I will spend quality time with my parents and my grandmother for at least 1 hour daily. My long-term goal is that I will take my parents for vacation once a year when I start earning. For my intellectual growth, I have decided to listen to educational podcasts every night for 20 minutes. For my physical growth, I will do 20 Surya Namaskar daily. For my spiritual growth, I will maintain a journal to self-reflect on my behavior every day. Thank you. Namaste everyone, my name is Ishika from grade 9. My SMART goals for me short term is I will get 95% in 10 CBSE board exams. Long term, I will become a pilot. My goals for my family, short term, I will keep my room organized every day. Long term, after 8 years of earning, I will buy a new house for my mother. For my nation, short term, I will plant a tree once in a year and take care of it. Long term, I will register to donate my organs once I turn 25 years old. For my intellectual growth, I will read a newspaper every day for 15 minutes. For physical growth, I will do 12 Surya Namaskars every day. For my spiritual growth, I will meditate for 15 minutes. Thank you. Namaste everyone, I'm Tanvi Bhushan from grade 9. My short-term goal for me is that I will score 95% in 10th board exams. My long-term goal is that I'll become an IAS officer. For my family, my short-term goal is every day I'll water my house plants. My long-term goal is that every year I will plan a trip for my family after I become an IAS officer. For my nation, my short-term goal is I will plant a tree every year on my birthday and take care of it. My long-term goal is that once I start earning, I will pay taxes regularly. For my intellectual growth, I will listen to educational podcasts twice a week for 30 minutes. For my physical growth, every day I'll do 12 Surya Namaskars. For my spiritual growth, I will listen to spiritual music for 10 minutes every day. Thank you.
Namaste everyone. My name is Gauri Mohite. I'm from grade 9. My personal goal, short term, is I will pass 10th and 12th boards with 95% and above marks. Long term is I will clear UPSC and become an IFS officer. My short-term goal for my family is I will help my mother in cooking and my father in maintaining important documents. And long-term goal is I will take my parents for a trip every year once I start earning. My goals for my nation is I will not litter my surroundings whenever I go out. And a long-term goal is once I start earning, I will pay taxes regularly. For my intellectual growth, I will read 4 philosophical and 8 fiction books every year. For physical growth, I will go for cycling every day for 45 minutes. And for my spiritual growth, I will meditate for 15 minutes every day. Thank you. Namaste everybody. My name is Siddhant Deokar from 9th grade. And for my personal goals for short term, I aspire to get above 80% in the 10th grade board examinations. And for long term, to get admission in NIFT. For me and my family, for short term, I will help my mother in watering plants every day. And long term, after 10 years of earning, I wish to buy them a house out of state for their vacations. For me and my nation, short term, I will plant a tree every 2 years and take care of it. And for long term, I will pay taxes regularly once I start earning. For my intellectual growth, I will read the news every day for 10 minutes and practice on my calligraphy. And for physical growth, to cycle every week for 2 hours. And for spiritual growth, to meditate every day for 10 minutes. Thank you. Namaste everyone, my name is Devpal and I am from grade 9. My personal goals, short term, I'll get 95% in 9th finals and get 98% in 10th boards. Me for my family, long term for my personal goals, I'll get admission in IIT Delhi and make my career in data science. Me for my family, short term, I'll make tea for my parents daily in the evening. Long term, I'll give 10% of my monthly salary to my parents once I start earning. Me for my nation, short term, I'll plant a tree on every birthday and take care of it. Long term, once I start earning, I'll donate 5% of my annual income to education of poor children. For intellectual growth, I'll study for 2 hours on the topic taught in the school and read one study-related book in every 6 months. For physical growth, I'll play 40 minutes of badminton and do 20 minutes of fitness. For spiritual growth, I'll meditate for 20 minutes daily. Thank you. Good day, everyone. I'm sure it's midday by now. Yeah, it's good afternoon, everyone. My name is Lokeshwar and I am from grade 11 science. For my personal goals short term, I will score 92% or above in grade 12 board exams. For long term, I will have my own surgical robot startup company in 10 years from now. For my family short term, I will spend 30 minutes of quality time with my family discussing our day. Long term, I will build my parents their dream retirement home 15 years from now and take them to Niagara Falls post their retirement. For my nation, short term, I will ensure public cleanliness by organizing cleanliness drives every 2 months. And long term, I will create a network of free educational platforms for all in 5 years' time. For my intellectual growth, I will study 3 research papers every week and I will perform projects related to them to improve my practical knowledge. For physical growth, I will train in the gym for an hour every day and play 4 hours of football every week. For spiritual growth, I will meditate for 30 minutes every day and I will study 10 shlokas of the Gita every week, understanding the meanings and applying them to my life. Thank you. Thank you, students. It was nice to know your goals. I would like to request if any parent would like to share any feedback
or would like to share your experience that this unique program has given to all of us. If I may request any parent to please kindly come up on stage. We would like to hear from you about this unique experience that you have shared with your child today. Good afternoon, everyone. So thank you so much for arranging this wonderful event for us. And it is really nice. I'm also a professor, and I would like to guide my students every time, every steps of their life, I guide them. But this is something positivity that you have put it in myself, and it is really a wonderful thing. And I will definitely imbibe it in my students as well, and to guide them nicely in their career. And thank you, sir. Thanks a lot. And the goal I want to achieve, I want to make my daughter a good human being in this world. Thank you. Very nice. For parents, it's not a language barrier. I understand Marathi, Hindi, Gujarati, English, anything. So please come up. Even Marwadi. Yeah, I do understand well. Would any other parent want to come up on stage and share your experience with us? It will be nice to hear from you. One of the fathers? Or you're not allowed to speak? Yes, yes. You can come. Namaskar, my name is Yogesh Lohar. Pranam to all the gurus here. Today's experience was very, very different. When I started for the school, I was knowing that something is going to happen, but I was not expecting this kind of goal setting here today. In corporate lives, we have done goal settings multiple times, but this one I will remember it forever. Thank you for the experience. नमस्कार नमस्कार आज के समय ज्ञान तो सभी स्कूल दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं, पर संस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है यही स्कूल दे रही है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि बच्चों में संस्कार भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि बिना संस्कार के ज्ञान या तो मतलब बिना संस्कार के ज्ञान हमें सही डायरेक्शन नहीं दे सकते। ज्ञान डिस्ट्रक्टिव वे में भी जा सकता है और प्रोडक्टिव वे में भी जा सकता है, पर जो संस्कार है वो डिसाइड करते हैं कि उस ज्ञान को किस वे में यूज कर रहे हैं। संस्कार वो रूट है, जड़ है, जो ज्ञान को सही डायरेक्शन में हमें यूज करने में मदद करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में संस्कार भी दिए जा रहे हैं इस स्कूल में, उनको रूट मतलब जड़ से मजबूत किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं एक महात्मा फुले का कोट हरदम पढ़ता हूँ, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। पुणे से थे वो और पुणे में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने लिख के रखा था कि यदि पढ़ाया नहीं गया बच्चों को तो उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। विद्ये विना मति गेली, मति विना गति गेली, गति विना क्षुद्र खचले, ऐसा कुछ कुछ उसमें लिखा। मैं अभी जब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या ये वाकई में सही हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से शिक्षा का आरंभ किया था कि विद्या विना मति गेली, तो विद्या आई तो मति आ जाएगी।
तो ऐसी मति आ गई कि मति के कारण नीति चली गई। आप देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा आप। उन्होंने लिखा था कि मति के कारण नीति आएगी, लेकिन जितने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं वो सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अनपढ़ आदमी फ्रॉड नहीं कर रहा है, पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। तो मतीमुळे नीति आली, ऐसा जो उनका कहना है, तो ये अंतर्मुख करने वाला सवाल है कि मति के कारण नीति आई या गई। अभी जो बात आपने बताई यहां पर कि बिना संस्कार के शिक्षा कोई मतलब की नहीं। साक्षरा शब्द उल्टा कर दिया गया ना तो क्या होता है, आप सोचिएगा जरा। साक्षरा को उल्टा करते तो राक्षसा शब्द होता है। तो साक्षरता के साथ साथ संस्कार नहीं हो तो उल्टे साक्षर यानी राक्षस तैयार करने का काम होगा। और इसलिए इस बात का बड़ा महत्व है, और इसलिए ध्रुव में संस्कारों की बात निरंतर करते हैं हम लोग। और बचपन से बच्चों को ऐसी फिल्में दिखाते हैं, बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स देते हैं, खास करके सैटरडेज को। अभी सैटरडे की छुट्टी करने का चल रहा है, मुझे पता नहीं क्या होगा लेकिन सैटरडे एक दिन ऐसा होता है जब हम लोग 1 घंटे का समय बच्चों को अच्छी फिल्म्स दिखाना या अच्छी कुछ बातें उनके साथ करना, तो एक उसको हम संस्कार क्लास कहते हैं। ये बचपन से ध्रुव में नियमित रूप से किया गया है, निरंतर किया गया है, और उसके ऊपर बहुत ध्यान रखा गया है कि ये बात अच्छे ढंग से हो रही या नहीं हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पेरेंट्स का। अब समापन की ओर बढ़े। हाँ, से पहले मैं बता दूं आपको कि आपका भोजन आज यही है ना सबका। हाँ, सब लोग यहीं भोजन करने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि बच्चों ने कुछ बड़े संकल्प किए हैं। तो माता पिता बच्चे को बीच में बैठाएंगे, दोनों आसपास में बैठेंगे। यदि कोई सी बच्चे के पेरेंट नहीं है तो टीचर्स बैठेंगे उसके बाजू में। और कुछ मीठा तो होगा आज, तो उसको पहले मीठा खिलाएंगे अपने हाथों से और फिर खाना चालू करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो आज जरा अपने बच्चों को लाड़ प्यार करना कि उसने बहुत बड़ा कुछ तय किया है, तो उसका आज विशेष स्नेह उसको आज देना चाहिए। सो टेक केयर ऑफ इट। Thank you, sir. Your words have enlightened us even more about the purpose and the function of Vidya Vrat. On behalf of DHRUV School Sus, I would like to thank our respected Sanjay sir, our trustee Mr. Yash Malpani, our dear principal Mrs. Sangeeta Rautji, our parents who have taken time to be with their children today, our heads of the departments of sports, Mr. Rohit, and performing arts, Mr. Bhushan, and both the teams, our faculty, Sridhar sir, Sonali ma'am, Candy ma'am, Madhura Deshpande ma'am, for the shloka and the interpretations. I would also like to extend my heartfelt gratitude to the entire staff and the admin team who have helped us put together this event with much success. Now we will proceed for lunch with our children to the dining area. I request all the children to please return the shloka booklets to the teachers. Namaste and have a wonderful day ahead. Thank you so much.